Hello students, कैसे हैं आप सब? So today we will discuss the topic of Rutherford alpha scattering experiment and the analysis of this experiment. So Rutherford was a well-known physicist who set up this experiment in 1908. This is the photograph of the laboratory, Rutherford laboratory. So this Rutherford experiment was actually involving firing of alpha particles. Here we call these as a stream of teeny positively charged particles. So during that time we are not aware about the alpha particles. So just called here stream of teeny positively charged particle on the target, and target was the thin sheet of gold foil. So this is the experimental setup or diagram layout of Rutherford alpha scattering experiment. So let us understand this experimental setup. So in this experiment, we start from this initial setup. Here we have a source, and that source is nothing but a radioactive source. So this radioactive source will emit a stream of alpha particles. Stream means high speed alpha particle will impinge from this radioactive source and fall on this target. So this is nothing but we put radioactive source in this box, and the shield of the box will be lead shield. Then this alpha particle, a beam of alpha particle, will pass through a slit. The slit make these alpha particle in very fine form, and here lead screen is set up, and inside this lead screen a single slit is incident. Then this alpha particle will fall on this target. This alpha particle will fall on this target, and this target is nothing but a thin sheet of gold, to which we call as a gold foil sheet. So when alpha particle will strike on this target or gold foil sheet, then after interaction with this gold foil, this alpha particle will scattered randomly in different directions. Some of the alpha particle go undeviated or passed straight from this gold foil and incident here, where some of the alpha particle will deviate from some angle, incident here, some deviate from this angle, incident here, some reflected back and deviate on this angle at this point C, and some at this point C, and some of the alpha particle will also goes back or deviate or reflected back directly toward the incident side. So here in this diagram, A is known as the point A. Where is point A? This one is. So A is transmitted beam, transmitted beams, alpha particle, incident here after interaction with this gold foil without any deviation or just a little deflection with small angle. And B is known as here scattered beam. We call B and C part as a scattered beam. So B part is at with small deviation, ये हमारा angle होगा, this will be at small deviation, where C part will be at large deviation, more than 90 degree around. And if we look at this diagram, this alpha particle comes and incident on this nucleus of the gold foil, and some of the ray will goes on undeviated, some of the ray goes on undeviated, which is shown here by this arrow at this point A. It means they are not strike with any of the particle and go toward this point A, and some of the strike within the nucleus, outside the nucleus, or within the atom and deviate, because we will later on explain this that what happened here, or deviate goes to point this B. Here this A is undeviated part and C is reflected at this angle. So this is the some layman setup of this gold foil.
So let us discuss this result of this Rutherford alpha scattering experiment in detail. तो आइए डिटेल में इसके बारे में जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ गोल्ड फॉइल के अंदर, यानी एटम के अंदर ऐसी फॉर्मेशन क्या है या ज्योमेट्री क्या है जिससे अल्फा पार्टिकल अनडेविएटेड अनडिफ्लेक्टेड भी पास हुए हैं, कुछ एंगल पे भी स्कैटर्ड हुए हैं और कुछ रिफ्लेक्टेड बैक भी हुए हैं. So let us discuss all this point in detail. So again this is the same diagram. If you look at this, most alpha particle pass straight through the foil and most of an atom has empty space. So these are the various parts. So let us read this point wise. Most of the positively charged bullet passed. This is not actually the bullet in lemon form. These are the stream of alpha particles which we call as a bullet. Passed right through the gold atom in the sheet of gold foil without changing course at all. It means some alpha particle passes through the atom of gold undeviated. It means ये रास्ते में गोल्ड के एटम के अंदर किसी भी चीज से नहीं टकराए हैं. तो जब नहीं टकराए हैं तो अनडेविएटेड डायरेक्टली पास और डायरेक्टली ट्रांसमिटेड. इट मीन्स देयर इज सम पार्ट इन द एटम विच इज लेफ्ट ब्लैंक, यानी कुछ हिस्सा एटम के अंदर ऐसा है जो बिल्कुल खाली है, जिसको हम एम्प्टी स्पेस बोलते हैं. Then some of the positively charged bullet, however, did bounce away from the gold sheet as if they had hit something solid. He knew that positively charged repelled positively charged. It means these alpha particle are which charged particle? Positively charged particle. So these positively charged particle deviated at some angle. Some alpha particles are deflected. It means they doesn't go directly or transmitted directly. They deviate their path. वो अपना रास्ता थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं और किसी एंगल से निकल जाते हैं. सिमिलरली कुछ पार्टिकल ऐसे हैं जो न्यूक्लियस के बहुत करीब जाते हैं, बिल्कुल पास जाते हैं, उससे टकरा के किसी एंगल पे वापस आते हैं. एंड देयर आर सम पार्टिकल्स जो न्यूक्लियस से डायरेक्ट टकरा के वापस आएंगे या थोड़ी सी दूर चल के या किसी पार्टिकुलर डिस्टेंस पे वो रुक जाएंगे, जो बिल्कुल इसके स्ट्रेट जाएंगे. जो सीधा न्यूक्लियस के सेंटर पे टकराएंगे, कुछ पार्टिकल ऐसे होंगे जो डायरेक्टली इसको इंसिडेंट करेंगे, तो कुछ ही पार्ट पे वो रुक जाएंगे. Later on we call this distance as a distance of closest approach. It means अब जो एटम और न्यूक्लियस की कॉम्बिनेशन अगर हम कैटेगराइज करते हैं, some part of the atom is left empty and there is some central portion, central core which is dense one, which is not empty. It means the formation of nucleus will be defined here and later on stage. So अगर हम एटम की फॉर्मेशन देखें तो एटम की फॉर्मेशन कुछ ऐसी रही होगी जहां पे एम्प्टी स्पेस था. मान लो यहां पे एम्प्टी स्पेस है, इधर से एम्प्टी स्पेस है, तो किसी भी चीज से अल्फा पार्टिकल नहीं टकराएंगे एंड स्ट्रेटली ट्रांसमिट हो जाएंगे. लेकिन कुछ इससे डेविएट होंगे, कुछ इससे रिफ्लेक्ट बैक होंगे. इसका मतलब बीच में कोई डेंस पार्ट ऐसा है जिससे टकरा के अल्फा पार्टिकल वापिस होंगे किसी पार्टिकुलर एंगल के ऊपर. So this could only mean that the gold atom in the sheet were mostly open space. Atom were not a pudding filled with a positively charged material. इससे पहले जो मॉडल था, थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल था, उसमें ये दिखाया गया था पॉजिटिवली चार्ज आर स्कैटर्ड थ्रू द एटम लाइक एज ए पुडिंग. सो ये जो अजम्पशन थी वो यहाँ पे रॉन्ग होती हुई दिखाई दे रही है. दैट एटम्स आर नॉट ए पुडिंग फिल्ड विद ए पॉजिटिवली चार्ज मटेरियल, बट दीज आर लुक्स लाइक दैट होल ऑफ द पॉजिटिव चार्ज इज कंसंट्रेटेड at the center of the atom. It means Rutherford concluded that an atom had a small, dense, positively charged center that repel his positively charged bullet. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. It is a very small part, क्योंकि काफी जो पार्टिकल्स हैं वो अनडेविएटेड गए हैं, डेंस पार्ट भी है, इसके अंदर कोई नहीं गया है, पॉजिटिवली चार्ज है. ये पॉजिटिवली चार्ज कैसे है, इसका आइडिया कैसे लगाया गया कि यहाँ पे जो पार्टिकल डेविएट हुए हैं अल्फा पार्टिकल, इनके ऊपर चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव. और न्यूक्लियस ने इनको रिपेल किया है, इसका मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज आपस में रिपेल करेंगे, तो न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव चार्ज है. सो रदरफोर्ड कॉल्ड द सेंटर ऑफ द एटम एज ए न्यूक्लियस. इसीलिए रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस सेंटर ऑफ द एटम को किस नाम से कॉल किया? न्यूक्लियस से. तो न्यूक्लियस की जो टर्म आई वो यहां से आगे जस्टिफाइड होती गई.
So Rutherford reasoned that all of an atom's positively charged particle were contained in the nucleus. तो ये assumptions prove हुई कि जितने भी positive charged particle हैं सारे कहाँ रहते हैं? न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं. So the negatively charged particle were scattered outside the nucleus around the atom edge. इसका मतलब this nucleus bearing a negative charge, it is dense one and it is small in size. So let us come on the mathematics part or some explanatory part of this Rutherford alpha scattering experiment. So Rutherford assumed that when alpha particle is equivalent to the helium atom, so it contains 2 electron. It means it has plus 2e charge, approaches the positive nucleus. Nucleus के ऊपर चार्ज कितना होगा? Plus Ze. Z is the atomic number. So plus Ze, ये पॉजिटिव न्यूक्लियस. किसकी बात हो रही है? जो हमने टारगेट मटेरियल लिया. टारगेट मटेरियल यहाँ पे हमारा कौन सा है? गोल्ड है. तो गोल्ड का एटॉमिक नंबर लगाएंगे और उसका इलेक्ट्रॉनिक चार्ज. दे एक्ट ऑन ईच अदर विद द कॉलम रिपल्सिव फोर्स. इसका मतलब जो अल्फा पार्टिकल आएंगे दे कंटेन पॉजिटिवली चार्ज. दे विल स्ट्राइक विद दिस gold foil, means with the nucleus of the gold foil. So nucleus of the gold foil also contain positive charge. So alpha positive, nucleus positive. So they will make the electrostatic repulsion. So they govern by the Coulomb's electrostatic law of repulsive force. So Coulomb's law is what? Nothing but force is equal to, this is constant K or 1/4 pi epsilon naught, where this epsilon naught is nothing but absolute or primitive free space. This is Ze is the charge of this target nuclei, plus 2 is the charge of the alpha particles upon r square. So r square is the distance between these two charged particles. किस डिस्टेंस पे वो स्ट्राइक करेंगे उनके बीच में चार्ज कितना रहेगा? मान लो अल्फा पार्टिकल हमारा यहाँ पे है, अल्फा पार्टिकल यहाँ पे है, न्यूक्लियस यहाँ पे है, तो इन दोनों के बीच में ये डिस्टेंस कितना है? So that will be r. So on combining this equation or solving this equation, 2Z square 4 pi epsilon naught r square. It means what is the important parameter here? This 2 is constant. Atomic number of the target will be constant. Is the electronic charge, that will be a constant parameter. 1/4 pi epsilon naught, again a constant parameter. 1 into 10⁹. And this force, repulsive force, is inversely proportional to r square. It means इनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा होगा, रिपल्सन कम होगी. अगर डिस्टेंस कम रहेगा किसके बीच में? अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के बीच में. व्हेन द अल्फा पार्टिकल विल अप्रोच द न्यूक्लियस, इट मीन डिस्टेंस गोज ऑन डिक्रीजिंग. तो जब डिस्टेंस कम होगा देन फोर्स ऑफ रिपल्सन विल बी मोर. तो जितना उसके नजदीक जाएगा उतना ही ज्यादा उसको वो न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल को रिपेल करेगा. सो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन कंक्लूड दैट an alpha particle which pass through the atom at a large distance from the nucleus, it means r is very large, experience very little electrostatic repulsive force, जो अभी हमने बताया. So it pass undeflected. तो जो undeflected आए हैं इसका मतलब उनके ऊपर repulsive force काम नहीं किया है. क्यों काम नहीं किया है? Because distance of those alpha particle from the nucleus will be large. उनका जो distance है large रहा होगा, ज्यादा रहा होगा, इसलिए repulsive force उन alpha particle के ऊपर काम नहीं किया. Hence that region in atom behave like a empty space. इसीलिए वो region हम empty space बोलते. Secondly, where alpha particle which pass close to the nuclei, इसका मतलब distance goes on decreasing, so r is very small, so they experience strong repulsive force and scattered through the large angle. तो large angle से वो scattered हुए हैं. इसमें देखें, मान लो ये गए हैं या ये वाली जो गए हैं ये यहां से टकरा के या ये यहां से टकरा के, इसका एंगल कुछ कम है. अगर सेंटर से देखें इसका एंगल और भी ज्यादा अराउंड 135 या 140 के आसपास होगा. इसका लेस देन 90 है, अराउंड 75 या 80 के आसपास रहा होगा. सो इफ अल्फा पार्टिकल डायरेक्टली एम्ड एट द न्यूक्लियस, मतलब स्टेट उसको डालें, द रिपल्सिव फोर्स स्लो डाउन द न्यूक्लियस, रिपल्सिव फोर्स स्लो डाउन द स्पीड ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड रिपेल देम बैक अलोंग द सेम डायरेक्शन. इट मींस जो अल्फा पार्टिकल डायरेक्टली सीधा बिल्कुल 0 डिग्री पे न्यूक्लियस से स्ट्राइक करेंगे तो न्यूक्लियस उनको रोक देगा. कहां पे रोकेगा? किसी पार्टिकुलर डिस्टेंस के ऊपर, जिसको डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बोलेंगे, तो वहां पे उनको रोक देगा.
एंड स्ट्रेटली डायरेक्टली रिफ्लेक्टेड बैक, और उनको वापस भेज देगा इस तरफ जहां से वो, जिस दिशा से वो आए हैं, जिस डायरेक्शन से वो आए हैं। 10. Rutherford made the following assumption for the development of mathematical formula for the number of particles scattered. अब बात आती है कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल स्कैटर्ड होंगे, ये किन चीजों पे डिपेंड करेगा। तो इसकी जो मैथमेटिकल इक्वेशन डेवलप की गई उसके लिए कुछ अजम्पशन ली रदरफोर्ड ने। तो अजम्पशंस क्या थी? पहली, दैट न्यूक्लियस एंड अल्फा पार्टिकल्स बोथ बिहेव्स एज ए पॉइंट मास एंड पॉइंट चार्ज, ये अजम्पशन सेट की गई। तो बाकी एम्बिग्यूटी को दूर करने के लिए, स्कैटरिंग इज caused by column repulsive force, obviously we discussed the electrostatic column force. Nucleus is of higher atomic number. Here it is well known that we consider the gold atom having higher atomic number as compared to helium atom. Then number of particles scattered to the unit area of fluorescent screen at a distance r from the foil and at an angle of phi with the original directions given by this one. So number of particles scattered at a particular angle phi. This is important, not all particle. This is number of particle angle scattered at an angle phi. मान लो कुछ पार्टिकल इस एंगल पे गए, सपोज वी कंसीडर दिस एंगल एज 75 डिग्री, तो 75 के ऊपर कितने पार्टिकल आए हैं, तो उन पार्टिकल के लिए जो एक्सप्रेशंस होगी वो ये होगी। सो हियर दिस n naught is the number of alpha particle actually incident normally on the foil, यानी एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने आए हैं, उनमें से कितने इस पार्टिकुलर एंगल पे स्कैटर्ड हुए हैं। अगेन चार्ज टर्म, E square is the electronic charge and this is the cosecant, cosec, fourth power of cosec. This is fourth power of cosec or simply 1 upon sin 4। अगर इसको cosec को लिखा 1 upon sin raised to power 4 जाएगा। एंगल क्या है? 5/2। नीचे क्या है? 16 pi square epsilon naught square, mass of the alpha particles, velocity of the alpha particle with which they will incident, and r, capital R। कैपिटल आर हमने बताया कि डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस? यूनिट एरिया ऑफ फ्लोरोसेंट स्क्रीन एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द फोइल, यानी कितने डिस्टेंस से वो न्यूक्लियस से दूर गए हैं, वो डिस्टेंस आर है हमारा। फॉर एग्जांपल यहां पे ये न्यूक्लियस के पास आ रहा था और इस पार्टिकुलर पॉइंट पे इसका न्यूक्लियस से डिस्टेंस इतना है। हालांकि पिक्चर में बताना मुश्किल है बिकॉज इट विल बी इन द रेंज ऑफ 10 raised to power -13, 14 एंड 15 सो ऑन, -14, 15 के आसपास, फर्मी के आसपास ये डिस्टेंस रहता है। सो इस डिस्टेंस से ये डेविएट हुए हैं। सो दिस द डिस्टेंस फ्रॉम दिस गोल्ड फायर। So these are the number of particles which are scattered. So these are various parameter. N naught is the number of alpha particle, T is the thickness of the foil, and small n number of atom per unit volume of the foil, कि कितने number of particle foil के ऊपर डल रहे हैं उस जगह पे, initial speed of the alpha particle and mass of the alpha particle. So this is the very important parameter. इसके ऊपर numerical आते हैं और एग्जाम में पूछा जाता है कि कितने number of alpha particle इस angle phi के ऊपर scattered हुए हैं। Then from this experiment we will define one of the distance जिसका हम बार-बार जिक्र कर रहे हैं, that is distance of closest approach. So velocity of those alpha particle which meet the nucleus in the head-on collision, जो head-on collision करेंगे डायरेक्टली, बिल्कुल जो इनिशियल रे है वो डायरेक्टली इंसिडेंट करेगी न्यूक्लियस के ऊपर, इसको हेड-ऑन कोलिजन बोलते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ दोज अल्फा पार्टिकल बिकम जीरो, यानी न्यूक्लियस उनको इतना स्ट्रांगली रिपेल करेगा कि एक स्टेज पे आके उनको रोक देगा एट ए डिस्टेंस। कौन से डिस्टेंस पे? इस डिस्टेंस को बोलेंगे क्लोजेस्ट अप्रोच टू द न्यूक्लियस। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, वेयर वेलोसिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल बिकम जीरो व्हिच विल स्ट्राइक डायरेक्टली टू द न्यूक्लियस. So suppose an alpha particle is traveling initially with a constant velocity v naught. V naught is the constant velocity जिससे वो चल के आ रहे हैं toward the nucleus at a very large distance from it. As the alpha particle approach the nucleus, its velocity goes on decreasing. Why? Due to electrostatic repulsion. Repulsion के कारण इसकी velocity decrease करेगी. जब इसकी velocity decrease करेगी, kinetic energy क्या होती है? Half m square. If velocity will decrease, it means its kinetic energy goes on decreasing. अगर काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगी तो इंक्रीज क्या करेगा? बिकॉज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो जस्टिफाई होगा। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल गोज ऑन डिक्रीजिंग व्हाइल इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज. सो एट ए डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच द अल्फा पार्टिकल इज स्टॉप्ड मोमेंटरीली, थोड़ी देर के लिए रुक जाएंगे, एंड दस होल ऑफ द
its initial kinetic energy will change to the potential energy. तो जहां पे ये आके रुकेंगी इनकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी. पहले क्या थी v नॉट, और क्लोजेस्ट अप्रोच डिस्टेंस जैसे ही आएगा वहां पे इनकी जो वेलोसिटी है दैट विल बी जीरो. सो एट दिस स्टेट दिस काइनेटिक एनर्जी विल बी चेंज टू द पोटेंशियल एनर्जी. अगर इसको मैथमेटिकली थोड़ा सा देखें, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, इनिशियली क्यों बोला? बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी इज v नॉट, सो इट्स काइनेटिक एनर्जी नथिंग बट हाफ m v नॉट स्क्वायर. एंड पोटेंशियल एनर्जी जो कोलम्ब इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन से पोटेंशियल एनर्जी हम निकालते आए हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस जेड ई प्लस 2e, नीचे r स्क्वायर था. यहाँ अब पोटेंशियल एनर्जी के लिए पोटेंशियल की फॉर्म में क्या आता है? d आ जाता है. डिस्टेंस हमारा d पैरामीटर होगा. तो इसको जस्टिफाई सिंप्लीफाई करते हैं, जेड ई स्क्वायर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट d. एंड बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दिस काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्विवेलेंट टू द दिस पोटेंशियल एनर्जी. सो हाफ m v नॉट स्क्वायर equal to z e square 2 pi epsilon naught d. ये टर्म हमारी आ जाएगी. So from this term the value of this distance of closest approach will be z e square upon pi epsilon naught m v naught square. तो ये हमारी फाइनल एक्सप्रेशन है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के लिए. अगर इसी चीज को डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को एज एन न्यूमेरिकल हम एक कैलकुलेशन करके देखें. सो इन केस ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम पोलोनियम, यानी सोर्स जो हमारा सोर्स है जिससे रेडियोएक्टिव रेज निकलती हैं, कौन सी रेज? अल्फा पार्टिकल या अल्फा रेज. देन वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल टेकन एज दिस वन. ये देखिए यहाँ पे मीटर पर सेकंड 10⁻⁷. सो दे आर कमिंग विद वेरी हाई वेलोसिटी. तो गोल्ड फॉयल, गोल्ड का एटॉमिक नंबर कितना आता है? 79. तो एक अजम्पशन आई थी जो हमारा टारगेट न्यूक्लियाई है उसका एटॉमिक नंबर को काफी लार्ज होगा. तो ऑब्वियसली इट इज लार्ज विद कंपैरिजन टू द अल्फा पार्टिकल व्हिच इज 2. Mass of alpha particle nothing but 4 times mass of the proton, so it is equal to this one. That is the electronic charge value, and this is the constant value 1/4 pi epsilon naught 9 into 10⁻⁹. So after putting the value of all these parameters in this equation, we got the value of distance of closest approach, that is 4.6 10⁻14 meter, which is the upper limit of the size of the nucleus. It means the distance of closest approach, which is 10⁻⁻14, or somewhere it goes or round about -15. यानी न्यूक्लियस ने, मान लो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ने वहां पे रोक दिया. तो रोकेगा कब? जब डायरेक्ट हेड ऑन कोलिजन होगा. इट मींस जहां पे हेड ऑन कोलिजन हुआ है दैट इज द लास्ट बाउंड्री ऑफ द न्यूक्लियस, एंड दैट इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. सो दिस एक्चुअली गिविंग द साइज ऑफ द न्यूक्लियस. और हमने पहले पढ़ा है, तो ये कितना हो जाएगा? 0.4 फर्मी मीटर, 0.46 फर्मी मीटर. सो इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, जो हम एक्सपेरिमेंटल थ्योरेटिकल वैल्यू लेके चलते हैं, ये उसी ऑर्डर का है हमारा. सो एस्टिमेशन ऑफ न्यूक्लियर रेडियस की अगर हम बात करें, फ्रॉम अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड कंक्लूडेड दैट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ अल्फा पार्टिकल टू द न्यूक्लियस वुड प्रोवाइड ए मेजर ऑफ साइज ऑफ द न्यूक्लियस. यानी ये जो पैरामीटर हमारा आया है, इससे हम साइज ऑफ न्यूक्लियस के बारे में आइडिया लगा सकते हैं. So nucleus may be considered to be resemble a small billiard ball whose radius does not include the outermost limit of the density distribution. It has also been established that the density of nuclear matter varies very little from nucleus to nucleus. और मोस्टली न्यूक्लियस में जो डेंसिटी है, न्यूक्लियर मैटर की जो डेंसिटी वो वेरी नहीं करती है, इतना डेंस पार्ट होता है कि वेरिएशन इन द डेंसिटी इज वेरी लेस एक्सेप्ट फॉर द लाइटेस्ट न्यूक्लियाई. It means that volume of the nucleus is approximately proportional to the total number of constituent particle. और ये स्टार्टिंग के वीडियो या लेक्चर्स में हम इसको देख चुके हैं, that radius is directly proportional to a 1/3, or simply r cube is directly proportional to a, where r naught is some constant. So distance of closest approach was first measure of the nuclei radii, which is found to be order of -15 meter. अगर r naught constant है, इसकी वैल्यू हम देखते हैं तो the value of r naught determined by various other methods vary in the range 1.2 to 1.4 Fermi meter. It means this order is same as we have find out previously. So this is the well-known approximation that size of the nucleus of the order of Fermi meter, and size of the atom is around of angstrom size, or 10⁻⁻10 meter, and size of the nucleus is 10⁻⁻15 meter, and the rest of the part is for electron. So thanks for watching this and sparing your valuable time.